శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శుభాభ్యాం శుభే శోభనే అభ్యుదయ ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః
द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले कल्याणमण्डपे भगवत् भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवम् अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని, మీ బంధువుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. वेंकटेशाय श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः. पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेदस आदेश फलप्रदाय श्री भाष्यकारोत्तम देशिकाय ஸ்ரீசைலபூர்ணாய நமோ நமஸ்தாத். எனது ஆச்சாரியரான ஸ்ரீசைலபூர்ணர் என்கிற பெரிய திருமலை நம்பிகளின் திருவடிகளை நமஸ்கரித்துக் கொண்டு எனது வர்ணனையை ஆரம்பிக்கிறேன். கலௌ வெங்கட நாயக, கலியுக தெய்வமாய் இருப்பவர் திருவேங்கடமுடையான் ஒருவரே என்பது சத்தியமான வார்த்தை. எங்கும் எப்போதும் எல்லாமுமாக இருப்பவர் திருவேங்கடமுடையானே. அவரது உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிமார்களோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. பக்தர்களே, இன்று மக நட்சத்திரம். மக நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் ஜகத்தை ஆழ்வார்கள் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் உண்மையில் நாம் அந்த நன்னாளன்று ஜகத்தை ஆளும் எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம். எந்த சுபகாரியங்கள் ஆனாலும் முதலில் செய்ய வேண்டியது சங்கல்பம். சுவாமி சொன்னபடி இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை பதிவு செய்த பக்தர்கள் அனைவரும் சங்கல்பம் செய்து கொண்டார்கள். இனி அடுத்து கலச பூஜை, பின்பு விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், அதைத் தொடர்ந்து மந்திர நீரால் சுத்தி செய்ய வேண்டிய புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம், இவற்றை ஒவ்வொன்றாக ஸ்ரீ வைகானச ஆகமப்படி இப்போது அர்ச்சக சுவாமி செய்ய உள்ளார். श्रीशास्त्रसारमखिलं खनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैकगुरुं प्रसन्नं. श्रीमते विघ्नसे नमः. भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यत्प्रतवक्त्राद्या पारिषत्या परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. सर्वतस्मार्तादिकं कर्मनिखनं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैखानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेना भगवतो वीर्येना भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुमन्यतां प्राणनायम्याम्.
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि स्तण्डलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनाख्यं क्रमकरिच्छन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्चकर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये ओं धाराचतुप्तशर्वाणशेषुधरत्तरित्य परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिमादकिष्ये कृणोमि दत्तागं शुचिरागं सुधर्मा निरमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं एते शतम्वृणये सहस्रं यज्ञयापाशामितरा पुत्रा तेभ्यो इन्द्रस्य विदोतविष्णर्विश्वे देवा अमञ्चन्दमृतस्य अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि वक्तामृतमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः जातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामगमर्चयेत् आग्नेयस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्तं हितो न शम्भो मयिराजन्ते रोदनिहस्तां प्रीष्यामदेशोपधानामनादर्यामे सुस्तान्दनिदान्तभात् पद्माकारमण्डले मुम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिदिगासमेत श्रीविश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजने नमः सूत्रपत्ये नमः जगाय नमः सूत्रपतिदिगासमेत श्रीविश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मादान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्यताम् कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्धरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्य खा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातनं तद्विप्रासोऽपि पण्यवोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदास्सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा मीनवदेमिषन्न द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भक्कुर्वीदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गृहीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते श्रीभगवदाग्नया भगवत्कैङ्कर्मं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मणि स्वस्तिर्ध्यास्महव्येर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयिन्नो अस्तु अनुराधानः हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवीमधृतस्समीनाः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथादन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भार्गदेहनः मुशतीरवपातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जजन्वथ आपो जनयथा चनः ॐ पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातुमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण मनाहिमा शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा कृतोगुं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि
अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी प्रणते देव्यागात् यस्ते भक्मेस्तनवोमीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्गेष वयकुस्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनात् वादप्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथ्वी पयसापयोभिः अर्तावनी जिज्ञे मापनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्ते वमन्मभिः अग्निरक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कृशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरुध्येति ऋषिभिः संभृतगं रसं सर्वगं सपोतमस्नाति स्थितिनं मातरिष्वणा पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतगं रसं तस्मै सरस्वती गुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पावमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमथो अं कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषजं शन्नो अस्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिशदेवार्त्वजो मार्जयन्तान् दक्षिणायान् दिशमासाः पितरो मार्जयन्तान् प्रतीत्यान् शिखा पशवो मार्जयन्ताम् उदेत्यान् दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् मूर्ध्वायान् दिशदिग्नः संवत्सरो यज्ञपदनमार्जयन्ताम् मदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयान् आत्मा गुहायान् निहितोऽस्य चिन्तोः समकृतुम्बस्य दिवेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसाः स येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवे कवीनां मृगर्विप्राणां महिषो मृगाणां येनो गृध्रानागस्कुधिर्वणा नागं सोमः पवित्रमत्येतरे भन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोक्येको चषमानो निषेते जहात्येनां भक्तभोगामजोऽन्यः अगं सच्चुजिहत्वसरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिथिर्दुरो नसते ऋषत्वरसद्रुतसत्योमसदब्जा गोचा अर्धजा अत्रिजा अर्धं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदासकं यदास्थानं प्रवेशगामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च திருக்கல்யாணத்தில் கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், தொடர்ந்தாற்போல் புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியம் இவை இனிதே முடிந்தது. இனி அடுத்து வரப்போவது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற அஷ்டத்துக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம். சென்று சேர் திருவேங்கட மாமலை ஒன்றுமே தொழ நம்பினை ஓயுமே என்று சுவாமி நம்மாழ்வார் வேங்கடத்தில் உறையும் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானை தொழுவதற்கு முன்பாக இந்த திருமலை ஆழ்வாரை தொழுவதே நம் வினைகள் அகல போதுமானது என்கிறார். இந்த பாசுரத்தை மனதில் கொண்டே சுவாமி தேசிகனும் தயாசதகம் என்கிற தெய்வீக நூலை தொடங்கும் முன்பாக இந்த திருவேங்கட மலையிடமே சரண் புகிறார். திருவேங்கடமுடையானின் கரும்பு, அவரது தயாகுணமே கருப்பஞ்சாறு, அந்த கருப்பஞ்சாற்றின் பிரவாகமே கட்டியாகி இந்த கற்கண்டு மலையாகிவிட்டது. அதுவே இந்த திருமலை. ஆகவே இந்த திருமலையை சரணமடைந்தால் அதுவே நமக்கு முக்தியை கொடுக்கும் என்கிறார். ஆகவேதான் இது வேங்கட வெற்பன விளங்கும் வேதவெற்பு என்றும் குறிப்பிடுகிறார். பக்தர்களே, திருவேங்கடமுடையான் இந்த திருமலை மேல் நின்று கொண்டு தனது வலது திருக்கையால் தனது திருப்பாதங்களை காட்டி நம்மை எல்லாம் அவரிடம் வந்து சரணமடைய சொல்கிறார். திரேதா யுகத்தில் தசரத சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரன் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரனாகவும், துவாபர யுகத்தில் யசோதை இளஞ்சிங்கமாக தேவகி வசுதேவர்களின் செல்வனாகவும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனாக அவதரித்த அந்த ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவே இதோ இந்த கலியுகத்தில் சீனிவாசனாக இந்த திருமலையில் அர்ச்சாவதாரமாக எழுந்தள்ளியுள்ளார்.
ஸ்ரீ ராமச்சந்திரனாக அவதரித்த போது பித்திருவாக்கிய பரிபாலனத்துக்காக வனவாசம் சென்ற ஸ்ரீராமன் ரிஷிகளையும் முனிவர்களையும் காப்பாற்றுவதற்காக தனது அஸ்திரங்களை பிரயோகம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. பின்பு கிருஷ்ணனாக அவதரித்த போது அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட கீதாச்சாரியனாய் பகவத்கீதையை போதிக்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் நமது திருவேங்கடமுடியானுக்கு எந்த அவசியமும் இல்லை. அவர் எங்கும் போக வேண்டியதில்லை. கோவிந்தா கோவிந்தா என்கிற அவரது நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டு நாம் தான் அவருடைய தரிசனத்துக்காக இந்த திருமலைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதோ இனி அடுத்து இன்று எம்பெருமானுக்கும் தாயார்களுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் ரட்சைகளுக்கு இப்போது பூஜை நடைபெற உள்ளது. ओम यपर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हिडानर्विबधा विराजन्ने तम्मयदोषागिस्याननाग्नविपणानपदन्ते ओम शेषमावाहयामि सहस्ररीरुषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनीतिरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरोधराधन स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा आवन्त्रभवत् स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोजनेम सूर्याचन्द्रमधा विवा पुनरुदधाग्नादाजानदा संगामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनावामिमारोहीम अम्भो मुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्या त्रेयं मनासा जतार्क्ष्यं प्रियातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिजं बाधे स्वभायन्न अस्तु शुभगं शुभम् ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற ரக்ஷை பூஜை இனிதே முடிந்தது. இனி அடுத்தது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். அப்போது நாம் திருமலையை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் அல்லவா? இந்த திருமலை ஆழ்வார்கள் காலத்தில் அரவகிரி என்று அழைக்கப்பட்டதாம். அதாவது அந்த சமயத்தில் இங்கே மலைப்பாம்புகள் ஏராளமாக இருந்ததாம். அங்கே அந்த மலைக்குறவர்களின் திணைப்புனங்களை யானைகளை பட்டி மேய கூட்டம் கூட்டமாக வருவாம். அப்போது அதை துரத்துவதற்காக அந்த குறவர்கள் கற்களை வீசி எறிவார்களாம். அந்த கற்களில் கூழாங்கற்களும் இருக்குமாம், மாணிக்க கற்களும் இருக்குமாம். அந்த ஒளி வீசும் மாணிக்க கற்களை கண்ட அந்த பாம்புகள் யானைகளை மேகங்களாகவும் அந்த மாணிக்கங்களை மின்னலாகவும் கருதி பின்பு மின்னலுக்கு பின்னே வரக்கூடிய இடிமழைக்கு பயந்து தங்கள் புற்றுகளில் போய் ஓடி ஒளிந்து கொள்ளுமாம். இந்த காட்சியை பொய்கையாழ்வார் வருணிக்கிறார் பாருங்கள். ஊரும் வரி அரவம் ஒன்குறவர் வால்யானை பேர எரிந்த பெருமணியை காருடைய மின் என்று புற்றடையும் வேங்கடமே என்று. பக்தர்களே, இதற்கு வியாக்கியானம் பண்ணின பெரியவாச்சாப்பிள்ளை அவர்கள் சொல்கிறார், அந்த குறவர்கள் கற்களோடு மாணிக்க கற்களையும் சேர்ந்து எரிந்தார்கள் என்பதன் காரணம் என்ன தெரியுமா? திருமலையில் வாழும் அந்த குறவர்கள் ஒன்குறவர்களாம். அதாவது அவர்கள் செழிப்பானவர்களாம். அவர்களுடைய பார்வையில் கல்லும் மாணிக்கமும் ஒன்றுதான் என்கிறார். அது மட்டுமல்ல, ஆதிசேஷன் குடைபிடிக்க அந்த ஆதிசேஷனின் சிரசில் இருக்கும் மாணிக்கங்கள் ஒளிவீச நடுவே கரிய மாணிக்கமாக விளங்கும் திருவேங்கடமுடையானே இந்த திருமலையில் இருக்கும்போது அவருக்கு முன்னே இந்த மாணிக்கங்கள் எல்லாம் எம்மாத்திரம் என்பதும் அவர் கூற்றாக இருக்கலாம். பக்தர்களே, கரிய மாணிக்கம் என்பதும் என்ன நினைவு வருகிறது தெரியுமா? அந்த கரிய மாணிக்கம் போன்ற திருமேனி அந்த சூரிய கோட்டி பிரகாசத்தின் முன்னே அந்த ஆதிசேஷனின் சிரசில் இருக்கும் மாணிக்கங்கள் கூட ஒளிகொன்றி போகுமாம். ஏனெனில் அவைகள் வெறும் மாணிக்க கற்கள் தான். ஆனால் எம்பெருமானோ கருமாணிக்கம் அல்லவா? இதையும்
நம்மாழ்வார் தன் திருவாழ்மொழியில் அண்ணல் மாயன் அணிகொள் செந்தாமரை கண்ணன் செங்கனிவாய் கருமாணிக்கம் தென்னிறை சுனை நீர் திருவேங்கடத்து எண்ணில் தொல்புகழ் வானவர் ஈசனே என்று பாசரமிட்டார். பக்தர்களே, ஆகவேதான் அந்த ஆதிசேஷனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணுவதாக வைகானச ஆகமம் கூறுகிறது. வனமாலி கதீசாங்கி சங்கி சக்ரீச்ச நந்தகி என்று பஞ்ச ஆயுதங்களையும் தரித்தவர் அல்லவா பகவான். அப்படி இருக்க அவருக்கு காப்பாக இந்த ரட்சை எதற்கு என்கிற சந்தேகம் கூட நமக்கு வரலாம். ஆனால் பக்தர்களே, ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எம்பெருமான் தன்னுடைய இந்த ஆயுதங்களை ஒருபோதும் தன்னுடைய ரட்சைக்காக பயன்படுத்தியதில்லை. நம் போன்ற பக்தர்களை காக்கவும் துஷ்ட சம்ஹாரம் செய்யவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டவும் தான் இந்த ஆயுதங்களை அவர் உபயோகித்திருக்கிறார். ஆகவேதான் அந்த எம்பெருமானின் திருமேனிக்கு எந்தவிதமான பங்கமும் வரக்கூடாது என்பதற்காக ஆதிசேஷனை இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணி அவருக்கு சமர்ப்பிக்கிறாரோ என்று கூட சொல்ல தோன்றுகிறது. இதோ அடுத்து அர்ச்சக சுவாமி எம்பெருமானுக்கு ரட்சையை சமர்ப்பித்துவிட்டு இப்போது அடுத்து பிராட்டிமார்களிடம் வருகிறார். பக்தர்களே, பிராட்டிமார்கள் எம்பெருமானின் வக்ஷஸ்தலத்தில் அகலாது வீற்றிருப்பவர்கள் மட்டுமல்ல, அவர்கள் இருவரும் தயாதேவிகள். அந்த தயாதேவிகள் அருகில் இருப்பதால் தான் எம்பெருமானின் அந்த திருவருள் நமக்கு பரிபூர்ணமாக கிட்டுகிறது என்று கூட சொல்லலாம். ஆகவே நாம் எம்பெருமானுக்கு செய்கின்ற அத்தனை உபச்சாரங்களும் அந்த தேவிகளுக்கும் செய்ய வேண்டுமல்லவா? இதோ இப்போது எம்பெருமானின் வக்ஷஸ்தலத்தில் அகலாதிருக்கும் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் அவரது பிராணநாயகியான பூமிதேவி தாயாருக்கும் இப்போது அர்க்யம், பாத்தியம், ஆச்சமனம் போன்ற அந்த உபச்சாரங்களை இதோ செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்த உபச்சாரங்கள் ஆனதும் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை அவர்கள் இருவரின் திருக்கரைகளிலும் எம்பெருமானின் சார்பாக சமர்ப்பிக்கவும் உள்ளார். நாமும் இரு தேவிகளையும் இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். லக்ஷ்மீம் ஷீரசமுத்திர ராஜதனயாம் ஸ்ரீரங்க தாமேஸ்வரீம் தாசீபூத சமஸ்த தேவவனிதாம் லோகைக்க தீபாங்குராம் ஸ்ரீமன் மந்த கடாட்ச லப்த விபவ பிரம்மேந்திர கங்காதராம் துவாம் திரைலோக்கிய குடும்பினி சரசிஜாம் வந்தே முகுந்த பிரியாம் என்று முகுந்த பிரியலான அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரை முதலில் இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். அருகில் இருப்பவள் யார்? பூமாதேவி, பொறுமையின் பூஷணம். ஸ்ரீ ஆண்டாளாக பெரியாழ்வாரின் திருமகளாக பூலோகத்தில் அவதாரம் பண்ணி நமக்கு திருப்பாவை எனும் கீதாச்சாரத்தை தந்தவள் அந்த பூமிதேவி தாயாரையும் இப்போது நாம் சேவித்து மகிழ்வோம். அன்னவையல் புதுவையாண்டாள் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினீ வேங்கடவர்க்கு விதி என்ற இம்மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு என்று உய்யக்கொண்டார் அருளி செய்த அந்த தனியனை நாம் இப்போது அந்த பூமாதேவிக்கு சமர்ப்பிப்போம். பக்தர்களே, முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு ரட்சையை சமர்ப்பித்துவிட்டு இப்போது பூமிதேவி தாயாருக்கும் எம்பெருமானின் சார்பாக அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த இரு தேவிகளையும் முன்னிட்டு கொண்டு அவர்களது மணாளனான அந்த கோவிந்தனை நாம் சரணமடைவோம். அடுத்து இப்போது இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை நமக்காக நம்முடைய பிரார்த்தனைக்காக செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த அர்ச்சக சுவாமிக்கும் திருக்கல்யாணத்தில் எந்தவிதமான பங்கங்கள், அதாவது கிரியாலோபம், தனலோபம், ஸ்ரத்தாலோபம், திரவியலோபம் போன்ற லோபங்கள் வராமல் இருக்க இதோ மந்திரித்த ரட்சையை அவரது கரத்திலும் சமர்ப்பிக்கிறார் இன்னொரு சுவாமி. பக்தர்களே, இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் இனிதே முடிகிறது. இனி எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வருகிறோம். அது என்ன? அக்னி பிரதிஷ்டை, அதைத் தொடர்ந்தாற்போல் ஹோம காரியங்கள். நம்முடைய மங்கள காரியங்கள் அனைத்தும் அக்னியை முன்னிட்டு நடைபெறுவதே வழக்கமல்லவா?
ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि उपासनाग्नो अग्निप्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रमस्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आसीर्वान् ममक्ते इंद्रशुद्धो न आगहे शुद्ध शुद्धाभिरोधिमिः शुद्धोर्यं विधा आर्य शुद्धो ममत्तिशोम यः इंद्रशुद्धो हिनो आर्यं शुद्धो रुद्राणि दाशनि शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं शुरासनि मयि देवाद्रविणवाजनन्तां मय्या शिरस्तमयि देवहूतिः इंद्रैव्या होता रामणयन्त पूर्वेरिष्टा स्याम धर्मासुमीराः मक्यं युजन्त ममयानि हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नौमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजयामि देवी ईश्वरमे रणक्रणोद विश्वे देवास यहमीर्यध्वं माहा आस्महि प्रतिगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेत यहसिञ्च तपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिह व्यवाहकं शमी गर्भाञ्जनगिन्यो मयो भूः घृतप्रदीको घृतयो निरग्ने कृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नं घृतपुरुषस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् सगिताजिक्षदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतसृजो मेन आवः समुद्रया बपमा अस्य विष्टासतश्च यो नमसतश्च वः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं च श्रवणं योदरा च तस्मै ओं भू सोममावाहयामि ओं भूर्यज्ञाङ्कमावाहयामि वोकं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वस्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रोक्ष्या ओं पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य वामने स्तः परशुरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसपदप्रशोभनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरावो देवीरग्रे पवो अग्रे गुवोऽग्रयमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपदं दत्तयुष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये योजमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णप्रणेष्यामि गिदमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रणया सोमावप्रणेष्यामि गिदमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रणया कोमप्रणयतसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तुरः इदं वदन्ति कृतपट्टापदागसहस्रभूषं यजमाने चिंचतीः प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधो अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्तिनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्ञभागे प्रजापतिके दृष्टिनोवामि ब्रह्मणे दृष्टिनोवामि इंद्रागे दृष्टिनोवामि अग्नये दृष्टिनोवामि सोमागे दृष्टिनोवामि अग्नये दृष्टिनोवामि सोमागे दृष्टिनोवामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिनोवामि प्रजापतिके दृष्टिनोवामि ब्रह्मणे दृष्टिनोवामि इंद्रागे दृष्टिनोवामि वसुभ्यो दृष्टिनोवामि मरुद्भ्यो दृष्टिनोवामि रुद्रेभ्यो दृष्टिनोवामि आपवोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे दृष्टिनोवामि बृहत्पतिके दृष्टिनोवामि मित्रागे दृष्टिनोवामि वरुणागे दृष्टिनोवामि आदित्येभ्यो दृष्टिनोवामि अस्मिभ्यां दृष्टिनोवामि पुष्णे दृष्टिनोवामि कक्षागे दृष्टिनोवामि कक्षदेवता सोमागे दृष्टिनोवामि औपासनयज्ञागे दृष्टिनोवामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्ववामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिनिर्ववामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि चरं तृप्यधिस्रयामि अग्ने द्योतिरसि समितिसि स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितमृक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रतिष्ठमृक्षप्रतिष्ठा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्ताद्विदापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः कृतसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आच्या चरुभिः यमामे अग्निष्टकाधेन वसन्त्वेङ्गाच शतं च सहस्रं च आयुतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्थश्च यमामे अग्निष्टकाधेन वसन्त इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः
జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసుమా షష్ఠి శతసహస్రాణ్యగితమక్షయమృపదమానయ అయంత యుద్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేత్యస్వ వృత్తస్వదేత వృత్తగిదాస్మాన్ ప్రజగా వశభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా ఆపవోపస్పృశ్యాం శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహా బృహత్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అష్టిభ్యాగు స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవతోమాయ స్వాహా ఉపాసనయజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్యా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్తాః నవదేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసవిదప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం జగరమణి ఓపాసనాగ్నౌ ఆఘారాంతే స్వరమంత్ర అక్షరక్రియాదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాదశక్వైష్ణవహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ నమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదప్రసుమా ఓం అతో దేవా అవంతనాగ్యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభి స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోవా అదాభ్యః తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి విస్సర్గతో వ్రతాని విస్పశే ఇంద్రస్య సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివే విచక్షణాదర్గ స్వాహా తద్విప్రాధమపి పన్యవోజాగ్రవాగం సస్సవింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసవిదప్రాసామిః దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాల
తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరే తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పూలీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు దిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతికిం పురుషహారీనావృతపత్రాశ్వకేతు కమాలక హిరణ్యకరమణక గురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రగభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమార వార్ధకేశరహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితధామాదప సంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైకతరాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యమకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నోమనీంద్రమదానసారవిర్భృగ్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రక్తకుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఘానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వగీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోక్షయాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిః శోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామా ధర్మణ సకల వేదాధ్యాయిని భార్గవస్యవన ఆప్నవాన్ ఔర్వవేదల పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం
सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगोः संकल्पतनयाम् उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि। ऋग्यजुस्सामाधर्मणशकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणीध्रुवत्रगार्हेय प्रवरान्विता काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि। कन्यां कनक संप्रन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि। प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்தில் ஸ்ரீதேவி பூமிதேவி தாயார்களே எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இனி அடுத்து அந்த மெய்சிலிருக்கும் அனுபவத்துக்கு வரவுள்ளோம். அதுதான் திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆசவனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பின்பு அந்த திருமாங்கல்யங்களை எம்பெருமானின் திருவடிகளில் வைத்து மஞ்சள் குங்குமம் சந்தனம் போன்ற வாசனை திரவியங்களையும் சேர்த்து புஷ்பங்களால் அர்ச்சிப்பார். இனி நாமும் இந்த சமயத்தில் சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். மகாபாரத போர் முடிந்துவிட்டது. 18ஆம் நாள் இறுதியில் பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி. அதற்கு மறுநாள் நடந்த வைபவம் இது. வெற்றி பெற்ற மகாரதர்கள் தங்கள் வெற்றிக்கு காரணமாயிருந்த தங்கள் ரத சாரதிகளை கௌரவித்து அவர்களுக்கு சன்மானம் வழங்கும் நாள். அதை குறிக்கும் வரையில் பஞ்சபாண்டவர்களின் ரதங்களும் வரிசையாக நிற்க சுற்றிலும் ஜெய் விஜய் பவா என்கிற கோஷம். பாண்டவர்களின் முகங்களிலோ பெருமை. முதலில் நிற்கிறது தர்மராஜனின் ரதம். அவரது ரதசாரதி அவரை வணங்கி வாழ்த்திவிட்டு சன்மானம் பெற்றுக்கொள்ள அடுத்தது பீமனின் ரதம். பீமனின் பராக்கிரமம் அனைவரும் அறிந்ததே. ஆகவே பீமனின் ரதசாரதி பீமனை மண்டியிட்டு வணங்கி உடனே பீமன் சந்தோஷத்துடன் தனது கழுத்தில் இருந்த வைரமாலையை அந்த சாரதிக்கு அளித்ததோடு பூவிதானமும் அளிக்கிறான். மூன்றாவது காண்டீபதாரியான அர்ஜுனனின் ரதம். ரதசாரதி ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா. அர்ஜுனனுக்கு ஒரே பெருமை, சாக்சாத் பரமாத்மாவே தனக்கு சாரதியாக அமைந்ததோடு இப்போது தாம் அனைவரின் எதிரில் அவர் தன்னை மண்டியிட்டு வணங்கப் போகிறார் என்கிற பெருமிதத்தோடு காத்திருக்கிறான். ஆனால் கண்ணனோ கீழே இறங்கவில்லை. அர்ஜுனனுக்கு என்ன என்றே ஒன்றுமே புரியவில்லை. அந்த அர்ஜுனனின் அக்ஞானத்தை அறிந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா இதழ்களில் புன்முறுவலோடு அர்ஜுனனை கீழே இறங்குமாறு சொல்கிறார். அர்ஜுனனுக்கு ஏமாற்றம். தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த கௌரவம் தனக்கு கிடைக்காதோ என்கிற வேதனையோடு கிருஷ்ணனின் வார்த்தைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு கீழே இறங்கினான். மனதிலோ ஆற்றாமை. அன்று கீதையில் தனக்கு சர்மஸ்லோகத்தை உபதேசித்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தான் தன்னுடைய சாரதி என்ற கடமையை நிறைவேற்றாமல் இருப்பதை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை அவனால். அப்போது கண்ணன் சொல்லத் தொடங்கிறார், அர்ஜுனா, உன்னுடைய எதிரிகள் இந்த போரில் உன்னை உன் மீது விட்ட அந்த பானங்கள் மந்திரங்களும் தீய சக்திகளும் உன்னுடைய இந்த தேரை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. நான் இந்த தேரில் அமர்ந்திருப்பதால் இவை உன்னை ஒன்றும் செய்யவில்லை. இதோ இப்போது நான் இறங்குகிறேன், நீயே பார் என்று கூறியபடி ரதத்திலிருந்து கண்ணன் இறங்க அடுத்த வினாடி ரதத்தின் கொடியில் இருந்த ஹனுமன் மறைய உடனே தேர் தீப்பற்றி எரிந்ததாம். சுற்றியுள்ள அனைவரும் திக்பிரமையுடன் நிற்க கண்ணன் கூறுகிறார், அர்ஜுனா, நான் முதலில் இறங்கி நீ அந்த தேரிலேயே இருந்திருந்தால் அத்துடன் நீயும் இப்போது எரிந்து போயிருப்பாய். உன்னை கடைசி காலம் வரை காத்து நிற்பேன் என்று நான் உன் தந்தையான இந்திரனுக்கு வாக்களித்தேன். அந்த வாக்கு பொய்யாகிவிடக் கூடாதல்லவா? ஆகவேதான் உன்னை முதலில் ரதத்தை விட்டு இறங்க சொன்னேன் என்றாராம். இப்போது நீ ஆசையிட்டபடி உன்னை நான்
நான் வணங்கி நான் பரிசை பெற்றுக்கொள்கிறேன் என்றதும், எம்பெருமானே, இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்ப விஷயத்துக்கு ஆசைப்பட்ட இந்த பாவியை மன்னியுங்கள். இந்த யுத்தத்தில் நான் இப்போது வென்றான் என்றால் அதற்கு காரணமே நீதானே என்று கதறியபடி கண்ணனின் கால்களில் நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுகிறானாம் அர்ஜுனன். பக்தர்களே, அவனை எழுப்பி அணைத்துக் கொண்டார் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா. பக்தர்களுக்காக எம்பெருமான் எந்த அளவு இறங்கி வருகிறான் என்பதை பார்த்தீர்களா? எம்பெருமான் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும். காரணமும் அவனே, காரியமும் அவனே. அவனுடைய சங்கல்பங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் நம்மால் ஒரு அடியை கூட நகர்த்த முடியாது, ஒரு துரும்பை கூட அசைக்க முடியாது. எம்பெருமானை நம்மிடம் இழுக்கும் ஒரே சாதனம் என்ன தெரியுமா? அது பக்தி. பக்தி என்பது புதிய விஷயம் அல்ல. நாம் எம்பெருமானின் மேல் வைத்திருக்கும் அந்த தீவிரமான அன்பே பக்தி. அது அமிர்தம் போன்றதாம். அசுர குழந்தையான பிரகலாதனும் ராமதூதனான ஹனுமனும் பக்த துருவனும் கொண்ட பக்தி இதுதான். இந்த பக்தி மட்டும் இருந்துவிட்டால் நாம் உண்ணும் உணவு பிரசாதமாகும், பருகும் நீர் தீர்த்தமாகும், பாடும் பாட்டு கீர்த்தனங்களாகும், நாம் செய்கின்ற பிரயாணம் யாத்திரையாகும், நமது உள்ளம் கோவிலாகும். ஆகவே அந்த கோவிலில் எம்பெருமானை இருத்திக் கொண்டு அந்த எம்பெருமானை நாம் சேவிப்போம். அந்த நோக்கத்தோடு தானே பக்தர்கள் அனைவரும் இந்த திருமலைக்கு ஓடி வருகிறார்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு கீதையை மட்டும் உபதேசிக்கவில்லை, வாழும் வழிகள் அத்தனையும் எடுத்துரைக்கிறாராம். வேண்டாத பொருட்களில் ஆசைப்படக்கூடாது. வைராகத்துடன் இருந்து பகவானின் திருநாமங்களை எப்போதும் உச்சரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். பகவான் நம்முள்ளேயே அந்தராத்மாக இருக்கிறான். அவர்தான் நம்மை வழிநடத்துகிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்தோமானால் நமக்கு பிரச்சனைகளும் இல்லை. அவரது திருவருளை தவிர உயர்ந்த விஷயம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஆகவே இந்த மாங்கல்ய பூஜை சமயத்தில் நாமும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சங்கல்பத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். நமக்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம். இதோ இந்த திருமலையானின் திருவருள் நமக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைத்தால் போதும் என்று இந்த சமயத்தில் வேண்டிக் கொள்வோம். அதோ திருமாங்கல்ய தாரணத்துக்கு தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சக சுவாமி. இனி திருக்கல்யாண மந்திரங்களை சொல்லி தாயார்கள் இருவருக்கும் திருமாங்கல்யங்களை எம்பெருமானின் சார்பாக இப்போது சமர்ப்பிக்க உள்ளார். ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये साजीव शरदशतं ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम प्रजापतिस्तोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु।
నారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ తతయుగం రాజావరణోనమజ్జనాం యథైక స్త్రీపౌత్రమగన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగదాంగార్హోదం దీర్ఘమాయుః అసోన్యోవస్థా జీవనామస్తమాదాపౌత్రమానందమభిప్రబుధ్యతాం యక్ స్వాహా ఇమం మే వరుణశ్రుతి హవమత్యాజప్రణగా రామవస్సురాజగే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమానసదాశాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేడమానో వృణే హవోదృశకం సమాన ఆజి ప్రమోషి స్వాహా తన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోమయాసకీష్ఠాః యజిష్టో వహ్నితమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే మమో భవతి నేదిష్టో అస్యావశనోప్యష్టో అవయక్ష్మణో వృణగమృడానో బీహిమృడీకం సహమోనయేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్యా సన్మనసాహితః అయాసర హవ్యమోహితే యానో దేభే జగ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్మమకస్తాః అన్మదేన్మమకస్తాః సరస్వతేన్మమకస్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఉపాసనాగ్ను లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసువా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిర్నుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతే క్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాకుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాకుం అను విశ్వాభుతత్వజా వయం ధారాపుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతే క్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిర్నుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతే క్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భువస్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్తాః అన్మదేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నో సర్వప్రాగిచ్చిత్తార్థమతో దేవాది షడ్వైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసువా ఓం అతో దేవా అవంతనోయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా
विष्णो कर्माणि विस्सदगितो व्रतानि विस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुनादरग् स्वाहा तद्विप्राधो विपन्यवो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अन्मदेन्ममकृस्ताः सरस्वतीन्ममकृस्ताः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चकर्मणि उपासनाग्नो कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसवा ॐ यदस्य कर्मणोत्यनेजं यत्वान्योन महाकरम् अग्निश्चस्मिष्टकृतान् सर्वकुष्टिष्टकं जुहुतं करोतु स्वाहा ॐ अग्नये स्विष्टकृते दुहुताहुतेनाङ्कामानागं समर्पयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा आग्नये नादाय स्वाहा आग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो भूदग्निस्तत्पुनरार्जातवेदाभिदर्शनि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनायमं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषडन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा आरुध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितशतेजोचितेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयो नीरापणस्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् निष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं ज्योर्भक्तं पृथिवीभक्तं मोषधिवनस्पतिकं धर्माप्सरसश्चैव भक्तं अग्निर्जैनं वेदर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवीजीर्णं मोषधिवनस्पतिकं धर्माप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दां बर्हिरः विडाकृतेन समादित्यैरवसभिस्सं मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदप्पितर्पिता महाप्रपिताभः साक्षय्यवस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममकृस्ताः नमदेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसमितप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये होमि अक्षितमसि मामे एक्ष्येष्ठाः वरिशिष्टागह्वरेष्ठोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदम्बाजी कुर्दमत्र मेधामश्वन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्य अर्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिमं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः वसतिर्म मातरः तस्मा अनङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वधः आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्मि भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्मि भूयासं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासनाजिकृन्तमया देव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि मयि
तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्तत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रपादर्घ्य आचमनीयं समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदाशुकं यदास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः। गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः। आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। यज्ञेश्वराय नमः। यदाशुकं यदास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் லாஜஹோமம், அதைத் தொடர்ந்து பூர்ணாகுதி, பின்பு திசைகழிக்கும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். வேங்கடவர் கன்றி வேறு மானிடர்க்கு பேச்சுப்படில் வாழகில்லேன் என்கிற உறுதியோடு இருந்தால் பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளையான ஆண்டாள் பிராட்டி. கனவிலும் நனவிலும் கண்ணனே. அந்த கண்ணனின் நினைவாகவே இருந்த அவள் அந்த கண்ணனையே மணாளனாக அடைவதாக கனவிலும் கண்டாளாம். அந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை அவள் தனது தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் 10 பாசுரங்கள். அதை இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பக்தர்களே, இந்த பாசுரங்களை தினமும் பாராயணம் செய்பவர்கள் நல்ல மக்களை பெறுவார்கள், தம்பதிகள் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. இனி அடுத்த நிகழ்வு மாலா பரிவர்த்தனம். பக்தர்களே, பகவானுக்கு ஒப்பு ஓமை என்பதே கிடையாது. அவனுக்கு ஒப்பாக எதையும் நினைப்பது கூட தவறுதான். இருந்தாலும் சில பண்டிதர்கள் பகவானை வானத்துக்கு ஒப்பிட்டு பேசுகிறார்கள். அது கூட காரணத்தோடுதான். எப்படி வான மேகங்கள் கருமை நிறமோ அதே போல மகாவிஷ்ணுவின் திருமேனி கருமேக வண்ணமாம். அங்கே வானவில்லில் தோன்றுகிறது வானவில். இங்கே இவரது திருக்கரத்தில் இருப்பது சாரங்கம் எனும் வில். அங்கே கொடிமின்னல், இங்கே இவரது வட்சஸ்தலத்தில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி என்கிற மின்னல் கொடி. இங்கே மழைக்கு ஏங்கும் சாதக பட்சிகள், இங்கே இவரது கருணை மழைக்கு ஏங்கும் பக்தர்கள். அந்த மழை நீர் தாபத்தை போக்கும், இவரது கருணை அந்த பக்தர்களின் தாபத்தோடு மனதாபத்தையும் சேர்த்து போக்கும் என்று கூறுகிறார்கள். ஆகவே எம்பெருமான் கருணை உள்ளவன், எம்பெருமானே நமக்கு கதி என்பதை காட்டுவதற்காக இந்த உதாரணம். இதோ இப்போது எம்பெருமானின் திருத்தோள்களில் சூடிய அந்த மாலை முதலில் அவரது வட்சஸ்தலத்தில் நீங்காது இருக்கும் ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் வந்து சேர்ந்தது. அவள் சூடி அழகு பார்த்த பின் அவளது மேனி பரிமளத்தோடு எம்பெருமானிடம் வந்தது. அந்த ஸ்ரீயினால் தானே எம்பெருமான் சீனிவாசனானான். இப்போது அடுத்து அந்த ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின, இவரது மாலைக்காக காத்திருந்த அந்த அவதாரம் பண்ணின பூமி தேவிக்கு இதோ அந்த மாலையை கொண்டு போய் சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, அவள் சூடி அழகு பார்த்ததும் அந்த மாலை திரும்பவும் அவர்களது மணாளனான எம்பெருமானிடமே வந்து சேரும். பக்தர்களே, மரகத மலை என்று ஆழ்வார்களால் போற்றப்பட்ட அந்த தோள்களுக்கு பிராட்டிகள் சூடிய மாலை அழகுக்கு அழகு சேர்க்கிறதல்லவா? அடுத்து இனி இதுவரை நாம் காத்திருந்த அந்த நிகழ்வு, அதாவது தூரத்திலேயே நின்று எம்பெருமானை கடாட்சித்துக் கொண்டிருந்த தேவிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு இருபுறமும் கொண்டு சேர்த்து சீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை நமக்கு தர உள்ளார்கள். பின்பு அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை ஆனதும் அக்ஷதாரோப்பணம் என்கிற கைங்கரியம் நடைபெறும். பக்தர்களே, இதை இந்த பக்கத்தில் தலம்புராலு என்பார்கள். மங்கள அட்சதையை ஆதி தம்பதிகளின் திருமுடிகளில் சேர்ப்பார் அர்ச்சக சுவாமி. அது முடிந்ததும் மங்கள ஹாரத்தியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவுக்கு வரும். இருந்த இடத்திலிருந்தே இந்த திருக்கல்யாணத்தை அனுபவித்த நம் எல்லோருக்கும் அந்த எம்பெருமானின் திருவருள் పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ గోవింద